Hello everyone and welcome back to Shubhangi Coding in Magical World. So today is our start session and today we will be learning how to create a Corona shooter game on Scratch. So let's get started. So first of all I would like to show you the game which we are going to create. Okay, so let's start. Okay, so this is the game we are going to create. Here is a rocket. It can move up and down and कोरोना is coming. अगर हमने कोविड को टच कर दिया तो क्या होगा कि हमारा जो गेम है ना स्टॉप हो जाएगा. एंड जब भी हमारा बुलेट भी जो है निकल रहा है जब हम स्पेस की प्रेस करें जैसे ही हमारा बुलेट जो टच कर देगा हमारा स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा. So this is the game we are going to make. So let's start. So first of all open new window, open scratch.mit.edu and then just click at the create button. You will get this type of interface. Now just remove the cat spread. After that just add your backdrop. So the backdrop will be of space. Just type the space. You will get these images. You can take any of them. Else you can just go at the internet, type for space or VG. You will get so many images. So you can take any. Yeah, right. So let's take here in backdrop of space. Let's take this one. Okay. So after taking it, you have to just take a sprite of rocket ship. Okay, rocket ship. After that, come in its costumes, and now just take the eraser tool and then just erase it. Okay. After that, और इसके बाद जो है जितने भी इसके कॉस्ट्यूम्स है आपको इसे रिमूव कर देना है एंड इसे जो है अब आप लोग इसको जो है टर्न कर देना है ऐसे. ओके, उस गेम में जो हमारा रॉकेट शिप है वो कुछ इस तरह से है. एंड उसके बाद अब आप लोग को साइज को 50% देना है. तो 50% दे देने के बाद अब आप लोग को जो है एक और स्प्राइट बनाना होगा बुलेट. ठीक है, तो बुलेट स्प्राइट अब आप लोग को जो है इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएगा. तो आप लोग इंटरनेट से ले सकते हो. या तो ये बुलेट स्प्राइट है एंड मैंने इसे अपलोड कर दिया. मैं जस्ट रीनेम कर लेती हूँ इसे और एंड कर देती हूँ इसे बुलेट. ओके, जस्ट रीनेम इट एज बुलेट. After renaming it, just give it size as 30. बुलेट जो है वो बहुत स्मॉल होने वाला है जिसको अब आप लोग को पोजीशन पे पुट करना है, सेम पोजीशन पे जहाँ पे हमारा रॉकेट और शिप है. ओके, इसके बाद अब आप लोग को एक और स्प्राइट अपलोड करना है कोरोना का. तो वो भी आपको इजीली इंटरनेट से मिल जाएगा. एंड जितने भी स्प्राइट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ आई जस्ट लीव दिस स्प्राइट्स ऑन द डिस्कॉर्ड ऑल्सो. Okay, so if you haven't joined the Discord, you can just check the description below. You will get the Discord link to join. Okay. Okay. Cool. Now just give it a size. So size में यहाँ पे 50 ही put करती हूँ. यहाँ पे 50 से भी कम put करना होगा. 20 ठीक है. तो इतने ही हमें स्प्राइट्स चाहिए. एंड अब हमें जो है यहाँ 3 वेरिएबल्स को बनाना है. एंड फर्स्ट वेरिएबल होने वाला है स्कोर. स्कोर विजिबल होगा स्टेज पे. दूसरा होने वाला है स्पीड एंड स्पीड नहीं विजिबल होगा, जिसे अनचेक कर देते हैं. एंड स्पीड के बाद दूसरा होने वाला है ओवर. ओके, अब हम आ जाते हैं अपने रॉकेट शिप पे एंड यहाँ लेते हैं एक वेंड्रॉन क्लिप का ब्लॉक. सो वेंड्रॉन क्लिप तो यहाँ पे मैं सेट करने वाली हूँ ओवर को. ओके, सेट ओवर टू फॉल्स एंड सेट द स्कोर टू 0. ओके, and I'm going to use this go to block. After that just go to controls, use this repeat until. So just repeat और ये जो भी थिंग्स मैं repeat block के अंदर डालने वाली हूँ ये तब तक होता रहेगा जब तक मैं टच नहीं करने वाली हूँ
कोरोना को और कोरोना स्प्रेड को। तो क्या होने वाला है, सो सी। अब आप लोग को इफ एक ब्लॉक लेना होगा, इफ, ठीक है, इफ की up arrow is placed. Then I want to change y by 10, just duplicate it, and when down arrow is clicked, change y by minus 10, okay, minus 10, and just put this in the repeat until, okay, इतना होने के बाद अगर ये टच कर लेता है कोविड को, then just set the over to true, ठीक है, and stop all. So we are done by defining the code for this rocket ship. Now let's come in the bullet and now let's put some code for it. So see, now for it, when one clicked, hide, and also when space key is clicked, here I am going to put in if and equal to. So if the over is equals to false, okay, if the over is equals to false, oh wait, if the over is equals to false, just create a clone of myself, and after that, now when I start as a clone, go to, or just put the x as 143 only, okay, and see, go to the sensing, take this block, now here just choose the rocket ship, okay, y position of rocket ship, and also then only just show and repeat until touching the edges. Okay, repeat until touching edge. Move 10 steps. Let's use this move 10 steps and then delete this clone. Okay, अगर ये edges को touch कर लेता है, just delete the clone. इसे put कर देते हैं यहाँ पे. So we are done by putting the code for the bullet also, and अब कुछ codes put कर देते हैं कोरोना स्प्राइट के, ठीक है. तो यहाँ पे अगेन when run click लेते हैं. Okay, when run click, just hide, okay, and forever, तो हमेशा के लिए मैं चाहती हूँ, लेकिन कंटिन्यूअसली जो है हैपन होते रहना चाहिए, तो उसके लिए मैं forever ब्लॉक को यूज करने वाली हूँ, ठीक है. एंड यहाँ पे जो वेट है, pick a random number, okay, so just pick a random number between 2 to 4, okay, 2 to 4, and also create a clone of myself, okay, create a clone of myself, and also see. Now when I start as a clone, okay, when I start as a clone, I want to just show. I want the sprite of COVID to be visible, so let's use this show block, and now let's take the go to block. So now just put the X position here as 240. So go to X position will be 240, and now for the Y position, pick a random number between minus 150 to 150, okay? Okay. And after this code, just set the size, okay? Let's just set the size to, and see. Pick a random number. For the size, also pick a random number between 20 to 40, okay? 20 to 40. Yeah.
40. Okay. So here's now after this size block, I'm going to just put in repeat until block here. Okay. So now let's put here repeat until. So repeat until. तो मैं चाहती हूँ ये सब काम होना चाहिए जब तक मैं टच कर लेती हूँ बुलेट को. जब तक मेरा जो स्प्राइट है ना कोविड का वो टच कर लेगा बुलेट को. सॉरी बुलेट को नहीं, वो रॉकेट शिप को टच. ओके, रॉकेट शिप को. तब मैं चाहती हूँ सेट दी स्पीड. ओके, जब तक ये टच नहीं कर रहा तब तक मैं चाहती हूँ सेट दी स्पीड ऑफ द स्पीड वेरिएबल. take a random number between -8 to -1. Okay, and now see, let's take the change the exposition by the speed value. Okay, now after that we're going to put some code also here. Now I'm going to put here an if condition. Oh no. Yeah, let's take in an if block. Okay, so if okay, so if the exposition is less than -220. If the exposition is less than -220, then see, then just go to, let's take in go to block, and यहाँ पे again random integer block है, उसे लेते हैं. So pick in random number between -50. तो सेम है, तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉक को जो है ना डुप्लीकेट कर लेते हैं. फिर यहाँ पे पुट करते हैं एंड इसके बाद एंड अब अगर ये टच कर लेता है बुलेट को. ओके, इफ इट्स गोइंग टू टच द बुलेट. ओके, if touching bullet, then just change the score by 1. Okay, change the score by 1. Okay, and okay, or see, you just change the score by 1, and after that just take and go to block also. या एक काम करते हैं, जो ब्लॉक है ना ये वाला, इसे कॉपी करना है, सेम थिंग्स है तो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं. तो जैसे इसे टच कर लेता है. एंड यहाँ पे आप लोग जो इस गेम को और अच्छा बनाने के लिए साउंड को भी ऐड कर सकते हो. So let's put the sound as, okay, you can take any. तो एक साउंड है बैंक नेम से, वो मैं कहा नाम है बैंक की टाइप किया है, इनको थोड़ी नाम है. ताकि हम लोग कोई और साउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं. तो ये सब तो नहीं चाहिए हमें. Okay, wait a second as the sound will come back.
I'm just not able to find the sound. I think ये update हुआ है आपका पता नहीं क्या हुआ. See if you guys get the sound, you can use it. It's a really good sound. Oh my god, oh my god. Oh, okay, I just get the sound. Its name was Bong. I was just thinking its name is Bang. Yeah, so this is the sound which I have used in that project. So let's make it more and more louder. Okay. So you can use this sound. The sound will just look good in your project, or else you can just choose any sound you want. Okay, so let's take the start sound. So guys, we are done by just making the Corona shooter game. Now let's test it. How is it? Okay. Okay. Let's touch the Corona. Yes. Yeah. So we're done by making the game. I hope you all just like the Corona shooter game. If like, don't forget to like, share, and subscribe. And thanks for watching. And your homework is to create a project like this. Add your own creativity. You can use any sprite you want to use. Okay, you can just search at the internet, and ये जितने भी sprites मैंने आज use किए इस project में, ये सारे sprites मैं आप लोगों को Discord पे send कर दूँगी. ठीक है? So thanks for watching, and you can just share your creation with us in the Discord. If you haven't joined, you can just join it. Okay, and you can just share in the Discord, and if you haven't joined the Discord, you can join. You'll get the link in the description below to join, and thank you. And you just click at the share button to share your project. So bye bye everyone, stay safe, and see you soon in the next session.